facing any difficulties. So as a regional council, we are duty bound and committed to serve you better and give you the proper assistance, may it be the procedural matters or may it be the other admission related things or may it be the coaching and other career help and this thing. So we are there to help you. And last year, we have done many things for the students. We had arranged for this campus placement this year. You are aware that the results still it is going on. We have already placed more than 400 plus students, and and the highest package was, as many of you are aware, that 22 lakhs was the highest package which was offered to the five students. And we are happy from WRC from Mumbai. This thing almost 125 students have already placed with a average salary of 6.5 lakhs. So I also means congratulate the students who have done this thing. And despite of all this pandemic, you can see that the numbers which are coming are good, and many students are joining this course. If you look at the number of registrations of WRSC, may it be the final registrations or inter, these are growing. So this is the sign of improvement. This is the sign of the need of the industry, need of the economy, need of the country, and that is where perhaps the role of a CMA will come. So I would just like to give a slight introduction about this course, and I'm sure that thereafter Vinay sir is going to take over and give you in detail. So I'm just presenting a screen to you. So become a CMA and be a nation builder. And we always say that behind every successful business decision, there is always a CMA. So you will see that many decisions which are happening. So just yesterday, you must have read one circular by RBI. So RBI has directed now if it comes to this uh, cooperative, urban cooperative societies, the managing director and whole-time directors, earlier these positions were occupied by the bureaucrats and the uh, local leaders. But there is a notification by virtue of it. They have recognized a cost accountant. You can become the whole-time director or managing director of urban cooperative society. We are already empowered to act as a financial auditor when it comes to the auditing of the financial books of accounts of the cooperative society. So may it be a cooperative bank, a cooperative housing society, or may it be a sugar factory. So as a cost accountant, we are allowed to do so. I'm sure that Vinay sir is going to take you forward in detail, and Raj sir is also there to help you understand what this means in terms of the career perspective to you. GST is the one of the dominant area wherein we are recognized to be at par with other professional qualifications. So I think Madam has given me the introduction, so you can just be in touch, and you can follow some of the articles what I've written on the CA Club India or Tax Guru, and also you can connect me over the Twitter or LinkedIn. On LinkedIn, I do post a lot of job vacancies. May it be the vacancies for the trainings or the for qualified CMAs or even experienced CMAs. So you can just let it will help you to understand that what is the need of the industry, and how you can be a successful in your career taking this course forward. So this is the course which was actually, this institute was formed as a private company in 1944, even before the uh, we got the independence. So it was the first of the institutes which was formed, accounting institute, uh, even before the we got the independence. Thereafter, in 1959, the institute was recognized statutorily by an act of parliament. The act is called as the Cost and Works Accountants of India. So then it got changed from the Institute of Cost and Works Accountants of India to Institute of Cost Accountants of India on 1st February 2012. So institute structure is basically, the headquarters are located at Kolkata, and there are four regional councils at four metro cities of the country, and there are 96 chapters and 9 overseas centers. There are number of MRA and MOUs with the foreign countries, and that is the one of the great advantage for the CMA fraternity, is that you can qualify in India,
and you can do a job overseas, maybe a CMA USA or CMA Australia or SEMA UK. So there are a lot of MOUs which are there, which you can take and you can pursue clear. A lot of members do choose that route, that if somebody want to do a career in suppose US, so instead of doing a CMA USA, you goes by the route of CMA India. So we complete CMA here in India, and thereafter you can get auto membership of CMA USA. So that saves a lot of cost, time, and also efforts. So this is the one of the key advantage as it comes to the institute. We are having around 70,000 plus members, 5 lakhs enrolled students. The members are recognized to be called as a ACMA or FCMA, depending upon the experience. After 3 years of experience, you can be called as associate member, that is the ACMA. And after 5 years of ACMA, you will be called as a FCMA. So 8 years of experience, we can become the ACMA. So it is the largest CMA body in Asia and second largest CMA body in the world. In fact, there are so many things that is very unique to the India, and one of such things is the having this management accounting institute having a separate stature and domain. So that is the one of the things. And in fact, IFAC president, IFAC is the International Federation of Accountants. So that is the parent body of all accounting bodies across the world, in fact. So from the IFAC, there are two nominees, which are the Institute of Chartered Accountants and Institute of Cost Accountants. Both are being treated as accounting bodies. And in fact, when a IFAC president visited India, and they said that as far as the cost accounting standards are concerned, that India is the pioneer, and the world is following us, because there are no such cost accounting standards which are there, like what we are having in India. So we are proud that this institute is taking a lot of research and this work of in the interest of the larger interest of the nation, and also in the interest of the whole world as well. So why CMA? So basically industry needs. So what is the need of the industry is that we should have a skilled and employable professionals. Friends, do remember a very important word, employable. This is something word which you have to always remember, because just getting a qualification is not sufficient. You should be in a position to get employed, or you should be in a position to give people employment. So that is how you should look at from your career perspective, that where you want to be. So CMA qualification enrich the employable skills among the students through the technical and industrial exposures at the completion of each level. CMA qualification enhances the employability at various sectors. uh, there are, we always say that behind every successful business decision there is a CMA. So many times what happens is that this mm, just to give an example, I will tell you the example of a movie. When we see any good movie, what we see is that we recollect the name of the uh, hero, name of the heroine, or maybe the actors, sometimes music director, isn't it? But do we recollect that who is the producer of the movie, who is the director of the movie? In fact, going beyond that, who is the script writer who has written the story? Do you remember who has written the script of a very famous movie? No, we don't know, because these are the people who are working at the back end of the system. So just like on the theater we see the front end as the actors, so behind that there is a brain, behind that there are set of people who are working. So that is what the role of a CMA is. So that is why you will see that there are many CMAs who are in the industry, but perhaps in terms of visibility, we are less visible because our domain is like that. So management accounting is the area where sharing means having this strategic cost pricing, or maybe the cost reduction, maybe the population of the strategy. These are the things cannot be in a business domain or in the public domain. Okay, so that's the reason you will see that these people are when you enter the industry inside, you will see that a CMA, that cost accountant, is everywhere, because he is in the heart of the business. So he is aware of what is happening around. But when it comes to the public reporting, that is where perhaps the role gets restricted because of the confidentiality, because of the secrecy of the business decisions. So that is why perhaps the required visibility is not there, but that doesn't mean that it is not needed. In fact, it's more needed. You will see that during this pandemic, I was saying that why
this course has grown. Okay, why the number of enrollments have grown, why the placements have grown? Because it's very simple. Always people, when everything is going well, nobody is bothered to look at what is going wrong, isn't it? When the pandemic like this comes and your business is affected, at the same time you want to know that where you have gone wrong, and that is where perhaps the role of the CMA is. So this qualification enhance your employability at various sectors. It is not only pertaining to the, there is one more um, misconception that cost accountant means he has to work in the factory. Not at all. Cost accountant is, although predominantly manufacturing, you will see cost accountant there, but equally CMAs are placed in all kind of services, may it be banking, may it be insurance, may it be the in IT. There are so many people who are working as a ERP consultants in IT companies. So all the service sectors, in fact, they need a more and more cost accountant, because the calculation of cost is difficult in case of a such industry where the composition of cost, the indirect cost is more. So that is where the role of the CMA is. So may it be the business, may it be even trading organization, you will see a lot of CMAs are doing a very crucial role. So this profession, effectively, what you can do as a CMA professionals is that gain as expert knowledge in the costing, pricing, taxation, strategic decision making, management, accounting, and effectively manage the funds and resources, facilitate the stability, sustainability, and growth of the organizations. Uh, so pursuing the CMA course ensures that there is an increased earning potentials either in service or in the profession as a practice. So there are three basic criteria. I'm going to cover up that too also, that what you can do once you are through. On value one, that is one more thing, that while doing articleships is mandatory, as all of you are aware. So you are going to get something out of it. So you can fund your own career. In fact, let me tell you that I have all this degrees what you have seen. So first degree was of course being funded by my parents. At that time, of course, the fee structure was also very low. But thereafter, all these courses or all these degrees I have funded myself, and because this profession allowed me to continue doing my work, and equivalently I can study. So this is the one very very good advantage of this CMA course, because as a cost accountant you are also have to be cost efficient with your own cost, isn't it? So that is the reason that we need to be very very aware, and we have to take the proper decisions. And of course it develops a lot of entrepreneur and skill development skills. So even though you are in a working in a company, that your job itself is like that, you are bound to have that kind of a entrepreneur skills, which is the key. May it be, days to come you may might venture into a new business. So that is a possibility. So I'm just going to show you some of the eminent names who are successful cost accountants, and who have done great service to the nations, like Arish Sharma. He was a former CMD, chairman and managing director of ONGC, which is the biggest public sector organization in India. Then Prabal Basu, he was the CMD of the Balmer and Lorry. C.S. Verma, he was the CMD of a SAIL, one of the biggest steel authority of India. Then Mr. Balenku Saha, he was the VC of KU. Then Swagata Sen, he is the you can see that this name not only includes the names of for public sector organizations, but also government academic institutions. So NTPC, you can take the private people like Max India, Jubilant Life Services, GRSC. So these are the people who are occupying the top positions. Just recently, our member Amitabh Banerjee has taken over the director of finance of very big. He was the Konkan Railway. He was the CMD, and he has also got promoted to CMD level just recently. So Balasubramanian, sir, he was the chairman of Company Law Board. So there are so many names you can just see on the screens, right from the private organizations to the PSUs to um, the banks like Kotak Mahindra Bank. The president is Gaurang Shah, who happens to be a member of our institutes. So just yesterday also, that one our Chandra Prakash Singh, he is means nominated as top 50 CFOs of the country. So we are proud of our such members, and I'm sure that one day to come, I want to see.
your name also in the list of such eminent CMAs. And Raj sir is, smiling because he's sure that perhaps days to come, he and me will be proud to say that, some of our students have achieved this kind of success. And that makes every teacher, very proud and happy. So just to tell you that these career opportunities are divided into three criteria. Basically, service, practice, service. I mean, again, there is one more uh, avenue, that is the academics. So academics also, you can be in the service in the academics. You can be, professor in the college or university, or you can also have your start the classes as Raj sir has done it, which is also a very good avenue. Uh, so this is how the career opportunities are there. Predominantly, our members are more inclined to the service, and there are good career opportunities for the youngsters. So I've given the example of the recent placements wherein we have could place 400 plus students. These details are available on the website, so I will request that just to go through the names of the companies, and even Institute has published the names and photos of the students who has done it. So it is not that something is just a headline to make a headline, but it is the reality what we are going to we have done. And perhaps days to come, I'm sure that these situations perhaps is going to get improved and improved. So I think with this, I would just like to say again thank you to you. I'm sure that Vinay sir is there. He's going to take you forward to this session, and he's going to give a much detailed way presentation than what you want. So this is what I would like to convey to you, and my best wishes to all of you are there. I'm sure that you will take a conscious and the uh, conscious and well informed the decisions about your career, because as a student you have to look at not the current trend but also what the trend will be there in the future. So few years back, doing accounting job, telling a balance sheet was considered to be very good accountant. In today's era, it is, technology has absorbed all these jobs. Some days back, many CAs, their practice was just to file a salary returns, and they were earning very good. Today, with the click of button, you are able to file this income tax return. You don't even need a professional help, isn't it? So these are going to be the challenges for you as a student. So management account is one of the field wherein, it cannot be replaced by any artificial intelligence. It has to be, has to have a human intelligence. So I'm sure that you are going to take very important decisions of your career. So do consider these options, and I'm sure that you will achieve a great success. Again, thank you very much, Poonam madam, Raj sir, and we look forward for the session of Vinay sir. Thank you so much. Thank you, sir, for guiding the students with your deep industry insight and informing them about the role of a CMA globally as well as in the industry. I'm sure the students are feeling like extremely inspired to start studying now, even harder, and to pick up the course. Um, okay, now as Harshad sir said, CMA is the career which is not only going to give you a professional degree but also employability. आपको तो सिर्फ degree ही नहीं but job भी मिलेगा once you have done once you're done with the course. So this is the degree which is going to give you employability as well, unlike a few degrees, okay, जो सिर्फ हम लोग को कॉलेज से वगैरह मिलता है. So now to give you how to go about the degree and how to register for the course and how to exactly go about things. Now I would like to call upon Mr. CMA Binay Thomas sir, who is an associate member of the Institute of Cost Accountants of India. He is also a founder of Binay Thomas Associates, and who is also a certified trainer. Binay Thomas sir is now going to address you all with respect to a detailed idea about how to go about with the CMA course. Once again, thank you, Harshad sir, for joining us and giving the students a deep industry insight. I would like to call upon CMA Binay Thomas sir to please take over the webinar. Yeah, thank you so much, Poonam, for the intro. And I also thank WRC and especially Harshad sir for
giving me the opportunity to, give an introduction and a detailed overview about the CMA course. And I also thank Raj sir and Raj classes for the opportunity given to me as far as the course is concerned. So I'd just like to share the screen. I hope, is it visible? Yes. Okay. So Harshad sir has already given you a preview about the course itself. So I would like to start with the course which is going to be the next course, the future course, or I should say the one which is making you a future ready professional. And CMA is a course where it's going to lead to your future. So about the institute and the background of the institute has already been very much detailedly discussed by Harshad sir. So I don't want to again repeat it, but I would like to start from here. So the institute, from the global perspective, is the largest CMA body in Asia and the second largest CMA body in the world. So that itself takes a pride that our cost and management accounting body stands apart from other cost and management accounting bodies. Now, when I talk about the network of the institute, first of all, our network has grown not just from the members, but also from the students. Almost more than 85,000 qualified professionals are working not just in industry, but also in practice, but also in academia also. You can see that we have got more than 5 lakh students and still it's counting. We have our headquarters at Kolkata, but we have another main office at Delhi. We have 4 regional councils. So we have at Kolkata, Chennai, Delhi, and Mumbai. We have across 110 chapters across the country, and all these chapters are falling under the regional councils. When I talk about overseas center, that means अगर students आपको बाहर जाना है इंडिया से और अगर आपको CMA Institute के साथ टच में रहना है, so we have got our centers outside India also. Now, centers of excellence. Centers of excellence is all about training and development of all professionals, CMA professionals. So we have 2 centers of excellence that is being established in our country. We have 52 CMS support centers exclusively for students. We also have 434 recognized oral coaching centers, which provides you the training, how to study foundation, inter and final, all the subjects that is there in the course. Now, when I talk about exam centers, अगर आपको CMA का exam center लिखना होगा, मतलब exam लिखना होगा, our institute is having a tie-up with 133 exam centers, जिसमें आपको वहां पे जाके exam देना है. So by and large, if you see, the institute network is growing, and this is the current status that you can see on the screen. So moving on. So what are the core strengths of CMA profession? Now, normally students, friends, अपने को जब cost and management accountant सुनाई देता है, तो what we think is only cost. So as Harshad sir rightly said, it is not just cost, because our role is not restricted to a factory. We go more than that. We are the ones who's going to lead the business. So जब business lead करने की बात आती है, so definitely you have to look from a governance aspect. So enterprise governance, benchmarking, business analytics, management control, financial management, ये सारा areas में students we need cost and management accountants. At the same time, when you talk about core areas, direct taxation, indirect taxation, cost and management accounting, audit and assurance, cost benefit analysis, business valuation, ये सभी areas में students CMA का demand आज भी है, पहले भी था और आगे जाके और बढ़ने भी वाला है. So this is something that we have to focus on, because आप जब एक career बनाते हो students, what you need to understand is the profession should have a future, and we definitely have a future, because these are all the areas where you require a cost and management accountant. Now, moving ahead, this is the recent achievement, which I don't know how many people are updated. ये news में काफी आया था that our qualification is being recognized by the University of Grants Commission. That means अगर आपको कोई भी exam देना है, which is equivalent to a postgraduate degree, then if you're having a CMA qualification, that's it. आपको कोई भी master's degree की जरूरत नहीं है. If you have a CMA qualification, then the University of Grants Commission, which is under the Ministry of Education of Government of India, has recognized CMA qualification equivalent to a master's degree, postgraduate degree.
सो दैट मीन स्टूडेंट्स आपको मास्टर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको पीएचडी अगर करना होगा, अगर आपको नेट एग्जाम देना होगा, तो उसके लिए आपको मास्टर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं है. You have this qualification which is equivalent to a postgraduate degree. So this is a recent achievement that our institute had, and we all need to be proud of it. Next, this is again a significant achievement that our institute has achieved. This is a benchmarking done by the UK NIRC. ये क्या होता है ना students? एक benchmark standard होता है where they try to assess the qualification. बाहर के क्वालिफिकेशन से जब कंपैरिजन होता है, तो कंपैरिजन में स्टूडेंट्स दे सी द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन. जो भी ये कोर्स करता है उनका नॉलेज कैसा है, उनका स्किल सेट कैसे डेवलप होता है. दैट इज वेयर द यूके एनआईआरसी, अगर स्टूडेंट्स आप इनका फुल फॉर्म देखोगे, नेशनल रिकग्निशन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ यूके, वहां पे हमारा कोर्स का असेसमेंट हुआ था, जिसमें जो रिजल्ट आया है वो ये है कि CMA qualification is equivalent to a master's degree in UK and UAE. इसका मतलब स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो, इसका मतलब ये होता है कल उठ के अगर आप यूके जाओगे, एंड नॉट जस्ट यूके, कोई भी और कंट्री में जाओगे, CMA qualification will be recognized because हमको यूके का recognition मिला है. That itself shows what is our qualification, the quality of it. So CMA inter, अगर आपने CMA inter stage को खत्म किया होगा, then you will be considered as a bachelor degree holder in the what do you say, in the comparison of UK graduation degree and UAE also. मतलब आपको वहां का ग्रेजुएशन डिग्री करने की जरूरत नहीं है, हमारा CMA इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू इट. सिमिलरली अगर आप CMA फाइनल करते हो, इट इज इक्विवेलेंट टू अ मास्टर्स डिग्री इन यूके. एंड इसकी वजह से क्या हो गया स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ दिस बेंचमार्किंग ऑफ CMA क्वालिफिकेशन, we have achieved international acceptance of our qualification. So कल उठ के स्टूडेंट्स अगर आप बाहर जाके कोई कोर्स करोगे और अगर आप CMA का डिग्री लेकर जाओगे, definitely you will have the upper hand because they will recognize it because we have got the UK NIRC acceptance. So when it talks about opportunity for higher studies or you talk about enhancement of professional opportunities, this is where students your qualification is at par with international qualifications. Moving on, let's discuss students about CMA course. Now, this is something that Harshad sir ने already आपको समझाया था. He gave a brief introduction about what is expected of a CMA professional. Students, एक चीज आपको समझना है कि आपने कोर्स कर दिया, जॉब मिल गया, वहां पे खत्म नहीं होते. इनफैक्ट वहां से आपका जर्नी शुरू होता है. So one set of phase of your life is to achieve a qualification. Then is trying to make a career in your professional career. So आपने अगर देखा होगा कि जैसे हर्षद सर ने बताया, there are a lot of people who have achieved the top positions, right from managing directors, CEOs, CFOs. They have achieved it only because this qualification not just enhances employable skills, but it also enhances employability at all sectors. For that students, अगर आप चाहते हो कि आपका employability बढ़े, हमेशा आपको opportunities आए, then students you have to gain expert knowledge not just in costing but accounting, compliances, taxation and strategic decision making skills. अगर students आप ये सब कर पाओगे, definitely CMA professionals will be effective in whichever area you work, and that is where students the demand increases. So students एक चीज समझो, the demand is not just in job. अगर आप सर्विस करते हो और अगर आप प्रोफेशनल हो, मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, your earning potential will keep on increasing. And not just that, this professional course will also help you to earn while you learn. Earn while you learn मतलब आप जॉब करके भी आप ये कोर्स को कर सकते हो, जिसमें आप कमा भी सकते हो, प्लस आप पढ़ाई करके क्वालिफिकेशन अचीव भी कर सकते हो. So this is something that is very unique and very few courses provide this, and our course is one of them. So moving on, next. Now normally students ये सबके दिमाग में होता है, सर हमारा जो सिलेबस है कभी कभी रिडंडेंट हो जाता है. रिडंडेंट मतलब बैकडेटेड हो जाता है, इट्स नॉट अपडेटेड. सो इफ इट्स नॉट अपडेटेड, आप कोर्स करके मार्केट में जाते हो, यू डोंट गेट जॉब्स. सो दैट इज अ बिग कंसर्न. अगर आप कोई भी कोर्सेज लेते हो, मार्केट में जो भी कोर्सेज अवेलेबल है, इट्स ऑलवेज अ शॉर्ट ड्यूरेशन. उसके बाद क्या हो जाता है, वो आउटडेटेड हो जाते हैं. एंड वो एनी कोर्स दैट गेट्स आउटडेटेड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द मार्केट. And our course students keeps on updating. The reason why is हमारा जो इंस्टीट्यूट है is a founder member of IFAC. Now IFAC is the mother body of all accounting institutions across the world.
सो आपका सीए बोलो, यूएस का सीपीए बोलो, फिर आपका सीमा बोलो, एसीसीए, ऑल दीज क्वालिफिकेशंस आर फॉलोइंग अंडर आईफैक्ट एंड वी आर द फाउंडर मेंबर्स along with the Institute of Chartered Accountants of India. So आईफैक्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से स्टूडेंट्स हमको हमारा कोर्स को डिजाइन करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि हमने कोर्स डिजाइन कर दिया और हो गया. We have to keep on updating. So the skill sets that we focus on the students to get updated is not just on the knowledge level, but comprehension, application, analysis, synthesis and evaluation. मतलब all round professional. तो इसका मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स आपने पढ़ लिया और वही जाके करना है. No. They groom you in such a way that you become such an updated professional that every company will be happy to hire you. So the knowledge pillars that this course is focusing on is management, strategy, regulatory function and financial reporting. Now the good thing is students, जैसा मैंने आपको बताया, आपने नोटिस किया होगा, मैंने अभी बोला कि यूके के एनआरसी ने हमको एक्सेप्ट किया. क्यों किया स्टूडेंट्स? क्यों किया? द रीजन इज हमारा सिलेबस इज एट पार विद देयर सिलेबस. इसके लिए वहां पे लिखा है मैप्ड विद द करिकुलम ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज. सिमिलरली अलाइंड विद द यूजीसी करिकुलम. अभी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्यों हमको मास्टर्स डिग्री का इक्विवेलेंट कोर्स समझा? बिकॉज आवर सिलेबस इज इक्विवेलेंट टू द मास्टर्स डिग्री. तो जो भी यूनिवर्सिटी से आपको मास्टर डिग्री मिलता है ना, उनसे एट पार है हमारा क्वालिफिकेशन. Similarly, we are also, our qualifications aligned with state boards, central boards, and सबसे important students, our qualification is as per the industry requirement. Because students, ये सब होने के बाद यूनिवर्सिटी रिकॉग्निशन, इंटरनेशनल सब कुछ रिकॉग्निशन है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के हिसाब से अगर नहीं होगा स्टूडेंट्स, देन ये कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है. So what I want to tell you is our syllabus is not just focusing on updating itself, it also is aligned with the industry requirements. Moving on. So the good thing students here is that the CMA course can be completed within 2.5 years, right from the foundation course. मतलब यहाँ पे 3 लेवल हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा. But roughly students 2.5 to 3 years अगर आप first attempt में एकदम dedicatedly करोगे तो हो सकता है. And जैसा मैंने आपको बोला, you can work also. That's a good thing is you can earn while you learn. And also the plus point is students, ऐसा नहीं कि आप CMA कोर्स कर रहे हो तो आप और कोई कोर्स नहीं कर सकते हो. अगर आपको और कोई कोर्स करना है तो parallelly आप कर सकते हो. So that also the institute gives you the freedom for it. Similarly, you are ready to serve the industry once you clear your foundation inter. Ready to serve मतलब आप जैसा इंटर क्लियर करते हो ना स्टूडेंट्स, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाते हैं. And the institute gives you that opportunities also. So these are some of the salient features. So now moving on. This is the entire criteria for the CMA course. So entire criteria means one is foundation inter final. मतलब स्टूडेंट जैसा आप कोर्स में एंटर करते हो ना, आपको 3 स्टेजेस पार करना है. Now depending on आपका प्रीवियस एजुकेशन क्या है, मतलब अगर आपने कोई कोर्स किया होगा तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन क्लेम सर्टेन एग्जेम्पशंस. वो भी मैं आपको बाद में बताता हूँ. लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आपको फाउंडेशन में, अगर आपको CMA कोर्स में एडमिशन लेना है, यू शुड बी मिनिमम 10th पास और सॉरी एंड यू हैव टू एंश्योर दैट आपका 12th का भी आपने एग्जाम अपीयर किया है, तब जाके स्टूडेंट्स आप लोग एडमिशन ले सकते हैं. नाउ इफ यू डोंट फॉल अंडर दिस कैटेगरी, ऐसा है स्टूडेंट्स आपका ग्रेजुएशन हुआ है, अगर आपने इंजीनियरिंग कोर्स किया होगा, अगर आपने CMA का फाउंडेशन क्लियर किया होगा, अगर आपने CS का फाउंडेशन क्लियर किया होगा, या फिर आपने CA का इंटरमीडिएट क्लियर किया होगा, स्टूडेंट्स आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हो. So these are the eligibility that you need to start your CMA course. तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास सिर्फ 10th and 12th है तो आपको फाउंडेशन से स्टार्ट करना है. अगर आपके पास उसके अलावा कुछ होगा जैसे ग्रेजुएशन, इंजीनियर्स, CS फाउंडेशन, CA इंटर, तो आप CMA के इंटरमीडिएट में भी आप एडमिशन ले सकते हो. नाउ स्टूडेंट्स एक चीज तो बहुत कंपलसरी है, अगर आपको CMA फाइनल में आना है तो आपको CMA इंटरमीडिएट क्लियर करना ही होगा. सो दैट इज अ वेरी कंपल्शन थिंग. सो देन मूविंग ऑन, दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स स्टूडेंट्स. तो अगर आप सोचते रहेंगे सर ये कोर्स में क्या क्या होता है, देन आपके सामने है फाउंडेशन कोर्स. देख लो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन कोर्स में व्हाट यू कैन सी इज 4 पेपर्स आर देयर. इकोनॉमिक्स में आप पढ़ोगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ोगे,
लॉ एंड एथिक्स पढ़ोगे, एंड यू विल स्टडी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो. नाउ स्टूडेंट्स, ऑलरेडी अगर आप ग्रेजुएशन हो या सीएस का फाउंडेशन क्लियर हुआ, सीए का इंटर क्लियर हुआ, इंजीनियर हो, तो ये चीज आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको इंटर से शुरू करना पड़ेगा. सो इंटर से व्हेन यू स्टार्ट स्टूडेंट्स, यू हैव टू गिव 2 ग्रुप्स कंसिस्टिंग ऑफ 4 पेपर्स ईच. सो 1 ग्रुप स्टूडेंट्स आपको 4 पेपर्स देना. सो फर्स्ट ग्रुप में आप देखते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब यू कैन से नॉर्मल अकाउंटिंग कैसे होता है, पार्टनरशिप फर्म में, कंपनीज में कैसे होता है, ये सारा चीज आप पढ़ोगे. लॉ एंड एथिक्स, नॉर्मल कंपनी लॉज, लेबर लॉज, लॉट ऑफ लॉज आर देयर, वो आप पढ़ोगे. डायरेक्ट टैक्सेशन, समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग इन दैट एरिया. डायरेक्ट टैक्सेशन आप पढ़ोगे. कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे, बेसिक्स, एकदम बेसिक्स कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे. एक बार आपका ग्रुप 1 होने के बाद स्टूडेंट्स आप आते हो ग्रुप 2 पे. अब ग्रुप 2 में स्टूडेंट्स थोड़ा सा सब्जेक्ट डिफरेंट हो जाता है. इफ यू सी the paper 9 that you're going to appear is operations management and strategic management. मतलब अगर स्टूडेंट्स आप एक फैक्ट्री में काम करते हो तो ऑपरेशन लेवल पे कहां कहां पे आपको एफिशिएंसी इंक्रीज करना है, हाउ टू इंक्रीज द मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ये सब चीज आते हैं. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये जो है ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैनेजमेंट के साइड पे जाता है. अभी आप बोलोगे सर कॉस्ट अकाउंटिंग तो आपने ऑलरेडी कर दिया सर, ये वापस रिपीट नहीं हो रहा है. स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट पे फोकस हो रहा है थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग. सिमिलरली हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस. आपके पास अगर 100 रुपीज होगा तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये चीज आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिखाया जाता है. इनडायरेक्ट टैक्सेशन, स्टूडेंट जीएसटी राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, एटलीस्ट बेसिक्स आपका इंटर में कवर किया जाता है. एंड देन कम्स इज कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. तो कंपनी अकाउंट्स में स्टूडेंट्स आपको क्या कैसे कैसे अकाउंट्स बनाने हैं, उसके ऑडिट किया जाता है, राइट फ्रॉम स्टैट्यूटरी ऑडिट टू इंटरनल ऑडिट टू कंकरेंट ऑडिट, एवरी ऑडिट्स इज बीन कवर्ड अंडर दिस पेपर. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो इंटरमीडिएट कोर्स prepares you at least at the basic level to know about all the areas that a professional accountant should know. एंड इसके वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के बाद ही आपको जॉब मिलना शुरू हो जाता है एज अ ट्रेनी और यू कैन से एज एन असिस्टेंट, आपको मिलना शुरू हो जाता है. नाउ ये ही क्वालिफिकेशन के बेसिस पे स्टूडेंट्स आप जब फाइनल पे जाते हो ना तो उसका लेवल बढ़ जाता है, बिकॉज नाउ स्टूडेंट्स यू आर इनटू एन एडवांस लेवल. तो आपने जो भी पेपर स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट में किया ना उसका आपको नेक्स्ट लेवल पढ़ना है. अगर आप ग्रुप 3 देखोगे, you have got corporate laws and compliances, you have got strategic financial management, you have got strategic cost management, direct tax laws and international taxation. तो आप यहाँ के टैक्स नहीं बाहर के भी टैक्स पढ़ोगे. ग्रुप 4 में कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कंपनीज में इंड एस से कैसे बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आईएफआरएस से कैसे बनता है, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस. स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे ये सेम पेपर आपको इंटरमीडिएट में था, लेकिन क्या लिखा था, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन. दैट मीन्स जीएसटी के बारे पे बेसिक्स. बट जब आप फाइनल पे आओगे तो ये लॉ को कैसे समझना है, उसको प्रैक्टिस में कैसे लेकर आना है, दैट इज व्हाट इज बीइंग फोकस्ड ऑन. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, दैट इज समथिंग दैट ओनली कॉस्ट अकाउंटेंट्स डू इट, एंड वो आपको पेपर सब कुछ बताएगा, राइट फ्रॉम how to appoint a cost accountant, how to do a cost audit, how to prepare a cost audit report, cost accounting standards, cost audit standards, ये सारा चीज आप वो पेपर पे पढ़ोगे. And the last paper students is basically a very unique paper. It's a paper where you don't find in any other courses. That is strategic performance management and business valuation. It is something where students normally बहुत सारे courses कुछ subjects के अंदर include करते हैं, but it's not a separate subject as a whole. And this is where our course is having an upper hand, because they teach you how to make strategic decisions, how to improve the performance of the company, and at the same time how to do a valuation. That is something that students, we are much in demand. वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, एक कंपनी का वैल्यू कैसे निकालते हो, 100 करोड़ का है क्या, 10,000 करोड़ का है क्या, शेयर्स अगर इशू करना है तो शेयर का वैल्यूएशन कैसे होता है, कंपनी का वैल्यूएशन कैसे, जब मर्जर होता है, टेक ओवर होता है तो वैल्यूएशन कैसे किया जाता है. दैट इज समथिंग दैट इज बीन कवर्ड इन दिस पेपर. सो स्टूडेंट्स, अगर आप ब्रॉडली देखोगे, इन माय नॉलेज दिस कोर्स कवर्स एवरी एस्पेक्ट that a professional accountant should be aware of. You talk about accounting, you talk about cost accounting, you talk about compliance, direct tax, indirect tax, management, strategic, valuation, and what not. Everything is covered. So ऐसा कोई भी area नहीं है students where we have not touched, untouched. Every area has been touched, every area has been covered.
और अगर स्टूडेंट्स आप ये पूरा नॉलेज लेकर आप जाओगे मार्केट में, टेल मी व्हाई यू विल नॉट गेट जॉब्स? देयर इज नो रीजन व्हाई यू शुड नॉट गेट जॉब्स, बट जैसा हर्षित सर ने बताया, यू नीड टू कीप योरसेल्व्स अपडेटेड. अगर आप अपडेटेड रहोगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर एट अ वेरी गुड वे. नेक्स्ट, नाउ दिस इज समथिंग दैट स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है. नॉर्मली दिस इज समथिंग दैट मेनी पीपल डोंट अवेयर. इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ नहीं देता, दे गिव यू वर्कबुक्स टू प्रैक्टिस. They have recorded webinars with them where you can go and see the webinars of every chapter of every subject. Similarly, they have PPTs जो आपको revise करने के लिए help होगा. There is a students e-bulletin that is being given by the institute which helps you to update yourself. मतलब जो होता है ना recent amendments जो आते हैं वो सब e-bulletins में cover किया जाता है. There is a e-learning facility 24/7 available. So सब कुछ चीज soft copy में, recorded में, सब कुछ आपको facilities दिया जाता है. प्लस यू हैव गॉट कोचिंग स्टूडेंट्स. इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग प्रोवाइड करता है फ्री में. मतलब आपने एक बार इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आपको कोचिंग फ्री में दिया जाता है. उसके बाद देयर इज अ नॉमिनल चार्ज. अगर आपको वापस कोचिंग अटेंड करना, देयर इज अ नॉमिनल चार्ज, बट अगेन इज वेरी लेस एज कंपेयर टू एनी अदर कोचिंग. मॉक टेस्ट पेपर्स. स्टूडेंट्स, मॉक टेस्ट पेपर्स वो होते हैं जो आपके मेन एग्जाम्स अपीयर करने के पहले अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स देते हो तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है. सो दैट इंक्रीजेस योर चांसेस टू पास द पेपर. देन देयर इज अ ई लाइब्रेरी. स्टूडेंट्स, ई लाइब्रेरी मतलब आपको जो बुक्स चाहिए ना स्टूडेंट्स, द इंस्टीट्यूट हैज अ रिपोजिटरी of all the books that you need to refer to study your respective subjects. So these are all the value added services that the institute provides exclusively for CMS students. I hope is this very clear. Next, training requirements. Students, एक चीज समझो, कोर्स पढ़ते वक्त आपको थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज अगर चाहिए स्टूडेंट्स, आपको एक्सपोजर जरूरी है. That is where our institute is also focusing on grooming you CMA students as CMA professionals. आप पढ़ाई करते हो, नॉलेज तो आपको मिल रहा है, उसमें there is no two ways on it, but then how to give you the practical exposure, because students वो अगर नहीं मिलेगा ना आपको, you won't be able to get the top jobs. तो इसके लिए students at the intermediate level and at the final level there is training. वर्ल्ड क्लास स्किल ट्रेनिंग है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. ये क्या होता है मैं आपको सब्सिक्वेंटली बता दूंगा. एंड फाइनल लेवल पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग. वन इज इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड देयर इज अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ आगे. इंश्योर दैट एक चीज समझो, ये जो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है ना, उसमें 140 आवर्स का ट्रेनिंग है एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इट्स अ 15 मंथ ट्रेनिंग. सो लेट्स गेट इनटू इट. जो पहला वाला ट्रेनिंग है ना स्टूडेंट्स, दैट इज सैप ट्रेनिंग. आई डोंट नो कितने लोग ने सैप के बारे में सुना होगा, बट एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट नीड्स टू हैव अ नॉलेज ऑफ सैप. सो सैप का ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट दिया जाता है. दे गिव यू नॉट जस्ट द course training, but they also give you students a lot of articles, documents. आपको काफी सारे नॉलेज रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाता है जो आप उससे पढ़ सकते हो. एंड द गुड थिंग स्टूडेंट्स इज आपको सैप का सर्टिफिकेशन भी दिया जाता है विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड. बट उसके लिए स्टूडेंट्स आपको 60 आवर्स का ट्रेनिंग मैंडेटरी करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट के साथ. सो इंस्टीट्यूट एंड सैप इंस्टीट्यूट एज हैविंग अ टाई अप दैट जो स्टूडेंट सीएमए में रजिस्टर करते हैं उनको ट्रेनिंग के बाद सैप का और सीएमए इंस्टीट्यूट का दोनों का भी आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट, एम्प्लॉयबिलिटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग. इसका स्टूडेंट्स टोटल 80 आवर्स का ट्रेनिंग है. माइक्रोसॉफ्ट, आई होप सबको पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, राइट. सो माइक्रोसॉफ्ट का स्टूडेंट्स आपको एजुकेशन सर्टिफिकेशन दिया जाएगा. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट स्किल्स आपको इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग देंगे, बट आपको सर्टिफिकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिलेगा. एंड इंस्टीट्यूट आपको ई फाइलिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा. स्टूडेंट्स, ई फाइलिंग मतलब इनकम टैक्स का ट्रेनिंग, आई मीन इनकम टैक्स का रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, जीएसटी का रिटर्न्स कैसे फाइल करते हैं, ये सारा ट्रेनिंग आपको इंस्टीट्यूट इंटरमीडिएट लेवल पे दिया जाता है. सो इमेजिन स्टूडेंट्स द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दैट यू आर गिवन राइट फ्रॉम द इंटरमीडिएट स्टेज, सो दैट फाइनल में स्टूडेंट्स आपको इतना ज्यादा नॉलेज मिल जाता है that passing the exam and getting a job is not much of a difficult task. Next, institute skills training support.
तो ये जैसा मैंने आपको बताया, लाइव ऑनलाइन क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वेबिनार्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, ये सारा चीज स्टूडेंट्स आपका 140 आवर्स डिटरमाइन करता है। एंड ये सारा चीज करने के बाद स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट आपका मॉनिटरिंग करता है कि आप कैसे ट्रेनिंग करते हो, हाउ आर यू परफॉर्मिंग। इंटरनल टेस्ट लिया जाता है एंड ऑनलाइन असेसमेंट से पता चलता है, आर यू लर्निंग द स्किल्स दैट इज नीडेड फॉर द प्रोफेशनल्स, एंड दैट इज व्हाट द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स आपको एक इंडस्ट्री में या फिर एक कॉस्ट अकाउंटिंग फर्म में आपको कंपलसरी करना है। 15 महीने का जब तक आप नहीं करोगे स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट अपीयर फॉर द फाइनल एग्जाम। समझ रहे हो? एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको हैंड्स ऑन जॉब एक्सपीरियंस मिले, so that आपका knowledge and practical experience should combine together, so that will help you to get jobs as early as possible. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, to develop necessary skill set among students, to provide practical exposure, to provide on-job experience, to develop and nourish pool of employable and future-ready professionals, to develop a disciplined attitude. So this is very important. आप प्रोफेशनल कोर्स करते हो, लेकिन एक डिसिप्लिन एटीट्यूड तब आएगा जब स्टूडेंट्स आप कोई फर्म में, कंपनी में एक्सपोज होते हो। आपको टाइम पे जाना पड़ता है, आपको प्रॉपरली ड्रेस करके जाना पड़ता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ता है, आप कैसे रिपोर्ट ड्राफ्टिंग करते हो, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, ये सारा चीज स्टूडेंट जब तक आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं मिलेगा ना, ये सब चीज का एक्सपोजर आपको नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाई द इंस्टीट्यूट हैज कंपल्सरीली डन 15 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। बट ध्यान दो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप चाहिए ना, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, तब जाके, जैसा हर्षद सर ने आपको बताया, एसोसिएट मेंबरशिप मिल जाएगा। एंड उसके बाद 5 years पोस्ट योर एसोसिएट मेंबरशिप यू गेट अ फेलो मेंबरशिप। सो दिस इज वेयर द ट्रेनिंग हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, अगर आपको याद रहेगा, मैंने पहले के स्लाइड में आपको बताया था, फाइनल लेवल पे इंडस्ट्री का ट्रेनिंग आपको दिया जाता है। नाउ ये क्यों दिया जाता है पता है स्टूडेंट्स आपको? बिकॉज ये ट्रेनिंग जब कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, उसके पहले दिया जाता है, सो दैट आप इंटरव्यूज में अच्छे से परफॉर्म करो। दैट इज व्हाई दीज टॉपिक्स पे अगर आप देखोगे, ये टेक्निकल सेशंस होते हैं, बुक कीपिंग, BRS, फाइनलाइजेशन कैसे करते हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट मैनेजमेंट, बैंकिंग, ये सारे पे स्टूडेंट्स आपको ग्रूम किया जाता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है। सो कैरियर प्लानिंग, बिजनेस एटिकेट, कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन। स्टूडेंट्स अगर आपको पता होगा, आप किधर भी अप्लाई करो जॉब के लिए, तो ये सब चीज होता है स्टूडेंट्स। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, सेकंड राउंड इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, फाइनल इंटरव्यू। अगर आप उधर फेल हो जाओगे स्टूडेंट्स, तो आप कैसे जॉब्स मिलेगा? तो ये सारा चीज इज गिवन ऑन द इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग। एंड लास्ट में देखोगे स्टूडेंट्स, आपको एक इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री विजिट भी करवा जाता है, जिससे आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले कि एक्चुअली कंपनीज में होता कैसे। So this itself shows you what it is. Now, these are the recent, you can say, trend students. More than 1,40,000 students took admission in the CMA course from 2019 to 2021, especially because 2020 was entirely pandemic. So we don't have particular 2020 ka, but from 19 to 21, we have the stats with us. More than 2 lakh students appeared for the CMA exams right from 2019 to 21. तो आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, इतना सारा स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेकर एग्जाम दे रहे हैं, so you can understand the importance of it. Examination result. Now this is a quite a very common question that has been asked. सर इसका पासिंग परसेंटेज कैसा है? सर डिफिकल्ट कोर्स है सर, ये पता है हमें, बट पासिंग परसेंटेज कैसा है? स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, डिफिकल्ट कोर्स जरूर है, लेकिन अगर आप सिस्टमैटिकली, डिसिप्लिनली, डिटरमाइनली अगर आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आप एक कोर्स पास हो सकते हो। सो फाउंडेशन में स्टूडेंट्स पासिंग परसेंटेज वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स आराम से पास करते हैं, तो 75% इज अ वेरी गुड परसेंटेज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो, आप 4 सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहे हो, आप 8 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, एंड दैट टू कोर सब्जेक्ट्स, तो डेफिनेटली डिफिकल्टी तो बढ़ेगा ही। एंड इसके लिए आप देखोगे 33% इज द पास परसेंटेज। फाइनल पे जाते हो स्टूडेंट्स, एडवांस लेवल पे जाते हो, डेफिनेटली डिफिकल्टी लेवल और भी बढ़ जाता है, जिससे पासिंग परसेंटेज थोड़ा सा और कम होके 26% होता है। माइंड वेल स्टूडेंट्स, ये 26, 33, 75 इज अ पैन इंडिया परसेंटेज, मुंबई महाराष्ट्र का परसेंटेज नहीं है। आई होप इज इट क्लियर? So this is the result statistics that the course is having. Now, when it comes to course fees, students, अगर मैं एक MBA का अगर एडमिशन का देखता हूँ, मिनिमम मुझे लाखों में खर्चा करना पड़ता है अगर मुझे एक एडमिशन चाहिए MBA कोर्स के लिए, yes or no?
You talk about any other master's degree, you need to shell out that much of money. फिर उसका coaching, training, the fees goes on. अगर आप देखोगे स्क्रीन पे स्टूडेंट्स, फाउंडेशन के लिए आपको सिर्फ 6,000 रुपीज देना पड़ता है. इंटरमीडिएटली यू हैव टू स्पेंड 23,100 एंड फाइनल में 25,000. स्टूडेंट्स अगर आप ये ऐड भी करते हो ना, you will see it's falling under 50 to 60,000. आज के तारीख में yes I understand COVID के time is difficult, but then again 50 to 60,000 is still affordable. And not only that, students, institute gives you installment facility. मतलब ऐसा भी नहीं कि one time payment. Institute tells you that आप part payment करो, next part payment आप बाद में करो. Similarly, अगर आप foreign में जाते हो और आपको still CMA course करना है, you have to pay the dollars. Dollars भी देखो students, very nominal, 250, 1,100 and 800. So this is something that students gives you an opportunity not just to pursue the CMA course from India, but also from abroad. And that is why students, अगर आप ये tagline देखोगे, the total cost of the CMA course is less than the interest cost on any loan that you take for education purpose. So this is quite encouraging, and I feel lot of students जिसका भी financially थोड़ा difficult होगा, even that is being taken care of because CMA course fees is definitely not higher. Moving on. Now, institute also gives additional, you can say, benefits. They give you scholarships, financial aids, especially students for those who are physically challenged. उनको refund and waiver of fees दिया जाता है, government scholarship schemes दिया जाता है, minority schemes भी दिया जाता है, and they are also giving schemes for economically challenged students. मतलब जिसके financial background weak होते हैं, उनके लिए भी एक special scheme है जिसमें आपको ये जो fees मैंने आपको बोला है उससे भी आपको कम देना पड़ेगा. But for that you have to give certain applications, आपको documents देना पड़ेगा, तब जाके आप ये सब schemes and scholarships avail कर सकते हो. Now, what are the career opportunities? Now, students, जैसा मैंने आपको बताया, जैसा हर्षद सर ने भी बताया, career opportunities, ये चीज मैं आपको clear करना चाहता हूँ students and friends, that it is not just job. Job ही सिर्फ नहीं है students. Practice is also an area which you can flourish. And आप खुद का एक कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, टू अ स्टार्टअप, जैसा राज सर का राज क्लासेस है फॉर दैट मैटर. आप खुद का क्लासेस, खुद का फर्म आप कर सकते हो. प्लस अगर आपको जॉब करना है, आप जॉब भी कर सकते हो. सो एंड नाउ सर्विस में भी इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया, दैट मींस इंडस्ट्री मतलब अगर आप जॉब करते हो कंपनीज में, एकेडेमिया मींस यू कैन बिकम एन प्रोफेसर आल्सो इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस. सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज. बट इसमें क्या क्या रोल्स है स्टूडेंट, दिस इज व्हाट आई वांट टू फोकस ऑन. Identified areas, job opportunities, this is something that you need to focus on. आप कोई भी एरियाज में कर सकते हो, एंड ये जो एरियाज इज नॉट लिमिटेड एरिया स्टूडेंट्स. तो कौन से एरियाज में आप काम कर सकते हो? कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, टैक्सेशन, इंटरनल कंट्रोल, ट्रेजरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, सिस्टम्स एनालिस्ट, एकेडेमिया, जैसा मैंने आपको बोला प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हो कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, बैंक्स में आप काम कर सकते हो, इंश्योरेंस में काम कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, द लिस्ट गोज ऑन. द पॉइंट हियर इज आपको डिसाइड करना है स्टूडेंट्स कौन से एरिया में आपको आपका करियर बनाना है. चलो, सम स्टूडेंट्स से सर मुझे पब्लिक सर्विस करना है, सर मुझे IAS करना है. दिस इज अगेन एन अपॉर्चुनिटी. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, CMA कोर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक सर्विस निकाला है, विच आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू पीपल माइट बी अवेयर. अगर आप देखोगे इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस, वहां पे सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट्स काम करते हैं, and if required chartered accountants. Those two professions are the only professions who work in that services. And if at all you want to do an IAS, IRS, IFS, then CMA course is being considered. Exemptions नहीं है, आपको कोर्स तो करना ही है, but that's an add-on. So these are the areas that you can flourish, students. Then comes important roles, job roles. जैसा हर्षद सर ने आपको बताया, you know, he gave you a list of eminent personalities who are holding top post. तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स आप सिर्फ एक मैनेजर का जॉब कर सकते हो. आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशन कैन लीड यू टू बेटर पोजीशंस. सो CMD, CEOs, CFOs, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, हेड ऑफ फाइनेंस, कॉस्ट एडवाइजर्स, कॉस्ट कंट्रोलर, the list goes on. Depending on the hierarchy that has been set by the organizations, आप सबसे top positions में जा सकते हो. And CMA gives you that opportunity. Now, this is something that आपको पता होना चाहिए practice में क्या opportunities available. So if you want to do your own practice, तो सर कौन से areas में practice कर सकता हो? आप cost auditor बन सकते हो, आप internal audit कर सकते हो companies का, you can be an internal auditor. आप valuation कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया एक subject भी है valuation पे.
आप ऑडिट कर सकते हो जीएसटी में, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हो जो हर्षद सर है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, आप कोई भी वैल्यूएशन कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन विच एरिया दैट यू आर डूइंग, लॉस असेसर, टैक्स कंसल्टेंट, आर्बिट्रेटर, एडवाइजर, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट, द लिस्ट गोज ऑन। तो प्रैक्टिस में भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू वांट टू फोकस ऑन। नाउ these are some of the achievements I can say, or I can say tidbits of the placements that CMA has achieved as an institute. Over 60% of the students have been recruited under public and private. The average pay package is around 8 lakhs, and the highest, which that record was broken, 20 lakhs tha pehle, and abhi students agar aap dekhoge, this has changed now. And let me show you the next slide. अगर आपको दिखा, this is 2021 का है, this is an updated one. हमने सीएमए इंस्टीट्यूट ने प्लेसमेंट करवाया था मई 2021 में, एंड दीज आर ऑल द लिस्ट ऑफ कंपनीज दैट केम टू इंस्टीट्यूट एंड हायर्ड सीएमए प्रोफेशनल्स। आपको कंपनी का नाम काफी कुछ आपको पता ही होगा, आईटीसी, वेदांता, एक्सेंचर, द लॉट ऑफ कंपनीज, राइट। फिर सेकेंड फेज करवाया था स्टूडेंट जून जुलाई में। सो राइट फ्रॉम बिग फोर्स टू बैंक्स टू आईटी कंपनीज, दे ऑल केम एंड हायर्ड सीएमए प्रोफेशनल्स। और आप देखोगे highest ITC to a fresh qualified CMAs was to 22 lakhs. OB is COVID ke waqt students, so you can understand the opportunities that you have. And average CTC was around 10 lakhs per annum. And the total placement abhi tak students, more than 500 CMA professionals has already been hired by top companies. So these are the achievements. Agar aap dekhoge, so these are all the public sector undertakings, companies that have come to our institute. I hope aapko dekhta hoga. NHPC, Indian Oil, Power Grid, you can name BSNL, BHEL, ये सारे कंपनीज आए हैं हमारे पास सीएमए इंस्टीट्यूट के पास टू हायर सीएमए प्रोफेशनल्स। बैंकिंग से भी, इंश्योरेंस से भी कंपनीज आए हैं स्टूडेंट्स, आईडीबीआई, कोटक, एक्सिस, फेडरल, अलादा बैंक, कोटक बैंक, द लॉट ऑफ बैंक्स हु हैव कम टू हायर सीएमए प्रोफेशनल्स। सो स्टूडेंट्स, आप समझते हो कितने सारे कंपनीज को सीएमए प्रोफेशनल की जरूरत है। आईटी कंपनीज, कंसल्टेंसी कंपनीज, अगर आप देखोगे इसमें बिग फोर्स तो मैक्सिमम है, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, केपीएमजी। हेल्थ केयर में आप देखो सिप्ला, देन अपोलो, these are all the top listed company students who come for our institute for campus placements. तो ऐसा भी नहीं स्टूडेंट्स आपको खुद से अप्लाई करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट इज गिविंग यू द पाथवे टू अप्लाई फॉर दीज कंपनीज। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स, बड़े कंपनी स्टूडेंट, सीएट, टाटा स्टील, एसीसी, टीवीएस, वेदांता, रिलायंस। इंजीनियरिंग में अगर कंपनीज देखोगे स्टूडेंट्स, ये सब कंपनीज आया है, वी हैव ऑल द रिकॉर्ड्स विद अस। गोदरेज, पिडिलाइट, HUL, DMart, Bata, Coca-Cola, all these companies have come across the years. Students e-services, students, this is where many of the students are benefiting from the facility that is the institute is providing. जैसा मैंने आपको बताया, webinars, e-libraries, mock test portal. अगर स्टूडेंट्स आप विजिट करोगे ना साइट icmi.in, आपको वहां पे स्टूडेंट्स पोर्टल अलग सा दिखेगा, फिर आपको ये सारा सर्विसेज आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट, बियॉन्ड सीएमए कोर्स। नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोग सोचते रहेंगे सर सीएमए कोर्स तो हो गया, सर अगर अपने को स्किल्स अपग्रेड करना है, डेवलप करना है, सर हमको कुछ नया पढ़ना है, सो व्हाट इज द इंस्टीट्यूट गिविंग अस? लेट मी टेल यू, दिस इज द लिस्ट ऑफ कोर्स दैट द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग माइंड वेल स्टूडेंट्स। ये सब सीएमए प्रोफेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, बट देन आइडियली इट इज रिकमेंडेड एडवाइस दैट आप एक बार आपका सीएमए कोर्स हो जाएगा ना, उसके बाद ये करो, बिकॉज दिस कंसीडर्स एडवांस्ड कोर्सेस, that is after you do your CMA course. So अगर आपको information system audit पे अगर आपको expertise बनाना है, then there is a diploma course. Forensic audit students, that is something that is a huge opportunity. बहुत कम लोग ये एरिया में काम करते हैं स्टूडेंट्स। Forensic audit, there is a diploma course that is given by the institute. अगर आपको data analytics, students data analytics, कितने सारे institute is giving certificate course, आपको वहां पे जाने की जरूरत नहीं, आपका खुद का CMA institute is giving you सैप कोर्स। अभी ये जो सैप कोर्स, ये एडवांस कोर्स है, ये जो आपका जो ट्रेनिंग है ना, उसमें उतना नहीं कराया जाता है, बट दिस इज एडवांस कोर्स। अगर स्टूडेंट्स आपको बिजनेस एक्सेल में करना है, इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस एक्सेल कोर्स, बिकॉज स्टूडेंट्स अगर आपको पता होगा ऑल द फाइनेंस प्रोफेशनल्स वर्क इन एक्सेल, फॉर्मूलाज, लिंकिंग, डिफरेंट वर्कशीट्स, इसके लिए सब आपको एक सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाता है। एंड गुड थिंग इज स्टूडेंट्स, ये सर्टिफिकेट इज अ जॉइंट सर्टिफिकेट गिवन बाय द माइक्रोसॉफ्ट एंड ICMA। सो यू कैन अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये दो सर्टिफिकेशन आपको मार्केट में रिकॉग्नाइज किया जाएगा। नेक्स्ट,
You have got diploma in management accounting, accountancy course. अगर students आपको arbitration में career बनाना है, then there's a certificate course in arbitration. Valuation में अगर आपको valuation करना है, there's an executive diploma course in valuation. And engineers, अगर कोई engineer background का CMA course कर रहा है और अगर उसको ये जानना है cost management accounting, how it is beneficial for engineers, then even the diploma is there for them also. Now, अगर students आपको taxation में career बनाना है, if you want to make a career in taxation, तो students उसके लिए भी there is a certificate course on TDS, on return filing, GST, advanced course on GST. फिर students अगर आपको GST audit कैसे करना है अगर वो समझना है, assessment procedures में आपको how to apply for assessment procedures, अगर आपको GST authority से notice आता है तो उसका reply कैसे किया जाता है, फिर appellate tribunal में कैसे present किया जाता है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे करवाया जाता है. Similarly, income tax assessment and appeals. Next, अगर स्टूडेंट्स आपको टैक्सेशन में इंटरेस्ट नहीं है, आपको वैल्यूएशन में कहां पे भी इंटरेस्ट नहीं है, सर मुझे बैंकिंग में काम करना है, सर मुझे इंश्योरेंस में काम करना है, then even that also is given with these courses. So we have a board, students, board of banking, financial services and insurance. वो board of the institute gives you all the certificate course. And students, mind well, ये certificate course is not just for working people but also for practice. Practice में भी students आप concurrent audit, internal audit, banks का, insurance का, and उसके लिए भी एक course किया जाता है. So certificate course on concurrent audit, credit management, treasury and investment management. And students ये ध्यान दो, ये जो last course है ना, ये NISM, I don't know whether you heard about it, this is again a government undertaking institute, उनके साथ हमारा tie up है and ये joint certification आपको investment management course करने के बाद मिलेगा. Then if you want to become a valuer, students, a registered valuer, then we have an organization which is our own institute's organization, that is ICMI RVO. तो अगर स्टूडेंट्स आपको अगर वैल्यूअर बनना है ना, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो आपको एक कोर्स करना पड़ेगा इनके साथ, ICMI RVO के साथ, जिधर यू हैव टू पास द एग्जाम एंड बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. तो अगेन स्टूडेंट्स ये बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे, बट दिस इज ओनली फॉर पीपल हु आर इनटू प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस में उनके लिए सिर्फ. नाउ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, हर्षद सर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर भी है, तो आपने देखा होगा उनको, उनका फर्म एंड उनका एक्सपीरियंस कितना ज्यादा है उसमें. सो obviously students यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एक कोर्स खोजा है, होता है, you have to pass an exam, after that you become an insolvency professional, so that also institute is providing you. So these are all the chapter network students, ये सब chapters है institute के, जिसमें आपको ना 4 regional councils, so these are 4: western region, southern region, eastern region and northern region. and ये जो chapters मैंने बताया students आपको 110 chapters, ये सारे chapters हर एक what do you say, western region, southern region, northern region, these are all the chapters. And अगर आप कोई भी council, I mean regional council से if you want to get in touch, then these are all the contact numbers and the email IDs, आप उनसे टच में हो सकते हो. So overseas center student, अगर आपको ये पता चल रहा है कि सर इंस्टीट्यूट का ऑफिस कहाँ पे है, let me tell you, institute is having a representation office in Canada, US, UK, then in the Middle East they have in Bahrain, Muscat, Dubai, नेपाल में है, सिंगापुर में है, टांजानिया, जाम्बिया एंड बोत्सवाना. तो 11 ओवरसीज सेंटर्स हमारे CMA इंस्टीट्यूट के हैं आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया. एंड ये प्रेस में स्टूडेंट्स आया था that the CMA course is going global. It was covered under Financial Express newspaper and Hindu newspaper, जहाँ पे CMA कोर्स के बारे पे एडवर्टाइजमेंट किया था that this is a course that every Indian should, I mean every graduate or every student should pursue. So being a CMA, be a proud Indian, be an enabler for self-reliant or Atmanirbhar Bharat. So thank you all, and I really will be happy that you people join the CMA family. So thank you so much. So over to you, Poonam. Thank you, sir. And now I call Manzari sir to give Binoy sir a vote of thanks. Manzari sir, can you please take over? Yes, madam. Thank you very much, sir, for organizing this such a types of seminar for the information of the student.
I am thankful to Raj sir as well as Binay Thomas sir for delivering the lecture to the student and spending the time for the institute. I am also thankful to Deshpande sir. He has also, in spite of his prior commitment somewhere, but today also, right now, I think Deshpande sir is not there because he had some meeting somewhere. So he told that he will be leaving now. So thank you very much for Deshpande sir also. Thank you to Poonam madam and students Omkar Kadam. Thank you very much. Thank you, sir. Poonam madam. Yes, sir. Thank you. Now, I would like to call upon Raju Auti sir to take over the seminar. And Raj sir, our beloved Raj sir, as you all know, he is going to tell us how we at Raj classes are going to make the entire CMA course in such a way so that it is extremely simplified for you, and how we are going to help you pass the exam. That is what Raj sir is going to talk about. Raj sir, as you all know, is a practicing chartered accountant. He is the founder of Raj Classes. He has been an ex-banker. He used to be a banker with Saraswat Bank. He's a passionate teacher of financial and cost accountancy, as we know, and he has a teaching experience of more than 19 years, over and above being a practicing chartered accountant. So now, Raj sir, please continue करेंगे webinar, sir. Yeah, thank you, Poonam madam. Thanks, everyone. Yes, sir. Thank you. Hi, students. Good afternoon, all of you. First of all, why CMA? CMA क्यों? अच्छा सर ने आपको पूरी तरह से समझाया कि CMA क्यों, why CMA. थॉमस सर बहुत अच्छी तरह से पूरा डिटेल में आपने हमारे स्टूडेंट को समझाया कि व्हाट इज CMA. CMA क्यों, क्या है CMA, और नेक्स्ट पार्ट कि हाउ टू डू द CMA. CMA कैसा करना चाहिए, क्या करने का है. सो CMA इज अ टफ कोर्स. डेफिनेटली ऑल प्रोफेशनल कोर्स पूरा का पूरा टफ रहता है. देन हम लोग उसको सिंपल में कैसा पास करेंगे. यानी I know कि CA, CMA, CS, all these are the professional course. पूरे के पूरे toughest है. हम लोग को just how to simplifying the way to be a CMA. कैसा करने का है. You know कि फाउंडेशन में हम लोग को 4 सब्जेक्ट है, 400 मार्क्स. इंटरमीडिएट में 800 मार्क्स, 8 सब्जेक्ट है. फाइनल में 8 सब्जेक्ट, 800 मार्क्स है. सो इट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू. जल्दी से जल्दी कैसा खत्म करने का ये कोर्स जो है. वी आर हियर द राज क्लासेस प्रोवाइडिंग यू एक्सेलेंट एंड अ सिंपल वे to achieve the CMA. How to study in this pandemic, e-learning. There are so many problems in front of the student कि अभी सब ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन नहीं है. लास्ट 1.5 year हो गया कि हम लोग कैसा करेंगे ये कोर्स, पास कैसे होंगे. So don't worry about that. We are here, Raj Classes. We are providing the online teaching, online lecture. Also along with that, we are providing the video lecture also. Video lecture means जो भी हम लोग पढ़ाते हैं पूरा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और हमारे साइट पे अपलोड करते हैं. तो जब भी आपको कोई भी मिस आउट हुआ, कोई भी लेक्चर बिकॉज ऑफ द इंटरनेट या अदर थिंग्स कोई भी मिस आउट हुआ, so don't worry, you can see the lecture from our site. CMA, I told you already, it is a tough job. लेकिन सिंपल कैसा करने का. कंप्लीट स्टडी CMA का प्रिपरेशन जो है वो कैसा करने का. कंप्लीट स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट. बिकॉज आप प्रोफेशनल बनने वाले हो. इज अ
हर्षद सर ने भी बोला है, थॉमस सर ने भी बोला है, पूरा ग्लोबल में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड आपका डिमांड है, तो आपका नॉलेज पूरा डिटेल होना चाहिए. सो यू शुड नो every subject in detail, conceptual understanding of every subject, maximum question solving, any solving and practicing, proper understanding of exam, knowledge भी चाहिए. एग्जाम पास होने का है, तो एग्जाम पास होने के लिए आपको पूरा प्लान चाहिए. टाइमली रिवीजन, प्रैक्टिस एग्जाम, एंड वन मोर थिंग, जब आप पास होके जाएंगे मार्केट में, जब आप पास होके ये पूरे वर्ल्ड में जाएंगे एज अ सीएमए, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. ये सब इंप्रूव करने के लिए द सॉल्यूशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राज क्लासेस. कोचिंग ऑफ सीएमए फाउंडेशन, इंटर फाइनल, ऑनलाइन जूम लेक्चर and also recording of the lecture for revision. The highest number of teaching and doubt solving sessions. हमारे यहाँ पे अपने राज क्लासेस में all teacher are qualified. पूरे के पूरे टीचर क्वालिफाइड है. जैसे कि अभी आपने ये जो पूरा वेबिनार मैनेज कर रहे हैं पूनम मैडम, अपने यहाँ पे लॉ पढ़ाते हैं. जब आप लाइव लेक्चर उनका देखेंगे, ऑफलाइन लेक्चर, एक्सेलेंट, आपको घर पे जाके पढ़ना भी नहीं पड़ता. मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रैक्टिस इन लाइव लेक्चर, exhaustive and concept based study material, exhaustive test series for perfection in the paper solving, timely completion of syllabus, providing the coaching at most affordable fees, experience and interactive faculties for each subject, वेरियस सेमिनार एंड वेबिनार फॉर स्टूडेंट गाइडेंस. हमारे यहाँ पे जो भी हमारे बच्चे लोग रहते हैं, जो भी, वी आर प्रोवाइडिंग पर्सनली टू इम्प्रूव देम. एंड डेफिनेटली ये सब करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट ये आपके सामने है. हमारा सीएमए इंटर बोथ ग्रुप क्लियर, अराउंड 23 people, both group clear, and for one group and group 2, single group, nearest to total 35 plus 23. कितने सब स्टूडेंट्स हमारे इंटर पास हुए, और ये सब अभी सीएमए फाइनल में. एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ राज क्लासेस, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू, योर हार्ड वर्क, एंड ऑफ कोर्स वी आर विथ यू. Raj classes giving you a very good discount in the fees, special offer in the pandemic situation. Our total fees for inter is 60,000, but we are providing the discount 25%, and our net fees is 45,000. Our new batch start from the 15th July 2021. Remember, I will show you the feedback of our students. Hello everyone, this is Shruti Sappa pursuing CMA final in Raj classes. I started my journey with Raj classes since 11th standard. Small technical issue. Hello everyone, this is Shruti Sappa pursuing CMA final in Raj classes. I started my journey with Raj classes since 11th standard.
Classes are repeated classes. If you see, then in every classes they have consistent top result every year, but in Raj classes they make sure that along with consistent top result, they also upgrade each and every student so they can end up with good grades. Here the relationship between student and teacher is strong enough so they can easily and freely ask and solve their doubt. I secured 87% in my HSC board exam. Then I decided to pursue CMA as my career profession. As we all know that to pursue any degree, professional degree is not easy. But in my mind, there was no doubt. I was very clear to join Raj classes because Raj classes is a prominent coaching institute. I luckily cleared CMA foundation and intermediate in very first attempt. But due to COVID pandemic, everything is at halt. But Raj classes made sure that the CMA studies will not lag behind. And they started arranging online lectures, and the same lectures were recorded so that students can utilize it afterwards for the revision purpose. So I decided to continue my CMA final with Raj classes. Raj sir means the backbone of Raj classes. We can call him the master of costing and accountant. He is a person who has capabilities of getting studies done from each and every student. He is a person who teaches to the best of his knowledge till the concepts are cleared in the mind of student. He is a person who just not only give examples, but he has also, he himself has set an example in front of all the students that if decided, then a below average student can also achieve a desired goals in his future. All I want to say that if you want to pursue CMA, then Raj classes is the place where you want to be. So think CMA, think Raj. आपने अभी देखा ये राज क्लास की स्टूडेंट थी, 12th में 87% मिला था, then joined the CMA. Now she is in TY BCom and also pursuing the CMA final. There are so many students who pass the CMA inter and now they are all in the CMA final. Just after 1 year, definitely they pass the CMA final exam and become a CMA. I will tell you just one story. Remember, imagine there is a bank that credit your account every morning with rupees 86,400 for consumption during the day. अगर कभी आप सोचो कि आपके अकाउंट में किसी ने 86,400 जमा कर दिया है. The basic condition is that the bank does not carry forward in balance from day to day, and hence at the end of every evening, the bank forfeit the unutilized balance. What will you do? Draw out every rupees and use it before that? Does, of course. Each of one of us has such a generous bank that credit our account every morning with 86,400 seconds, 1440 minutes or 24 hours. Every evening, it does forfeit the balance of time that cannot be used during the day. If you fail to use the day's credit, it is your loss forever, and there is no going back. There is no drawing against the tomorrow. You must live in the present on today's credit. The truth is that it is not about how much time you have it. It's about how effectively you manage your time. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift, and that is why it is called as the present. And put this valuable gift called the time to prudent utilization, and that's what we call it as a time management. So really, I tell you, so don't waste up your time and make a wise decision about your career. I'm really happy to our students in this pandemic situation also. They are doing a well study online, and they pass also CMA inter. So it's a really great job. You know, the one advertised Dettol, कभी आपने देखा है 99.99 क्लीन, वैसे ही हमारा कोर्स है. हम लोग हार्ड वर्क करने का 99.99%, खाली 0.1%, 0.01% is your luck. तो अभी don't wait,
joined with us. और इसलिए राज क्लास is a different identity. You know why? What is the speciality of the Raj class? CMA के लिए specialization is a, जैसे हम लोग बोलते हैं brand, CMA Raj class is a brand of CMA, and that's why you joined the CMA, joined the LART, joined CMA, joined Raj, learn from the leader and the way of your success. Raj class is here. Thanks. Poonam madam, just 1 second. Yes. Thank you so much, Raj sir. Poonam madam, just 1 second. Just I Yes. want to say something. First of all, I want to give thanks to everyone, especially thanks to our chairman, ICA chairman, CMA Harshad sir, for giving up their valuable time and sharing the value addition to our knowledge. Thanks to our CMA Thomas sir for such a wonderful presentation which will help to our students. Even those thanks to CMA Poonam madam for conducting this webinar very gracefully on behalf of our Raj classes. Thanks to Prasad sir, thanks to Omkar sir, thanks to Vanjari sir, making all the arrangement for this webinar. And it's really good experience to us, and it's a really value addition to our students. Thanks to everyone. Thanks to all students for attending this webinar. Thank you, madam. Thank you, Raj sir. You have helped the students to understand कि हम लोग उनके लिए ये कोर्स कैसे मस्त एकदम सिंप्लीफाई करके देंगे. And आपने इतने amazing speakers arrange किए who are like the best people in the industry who came and spoke with us and who gave us like a lot of knowledge about how to go about things and what all can you do with the degree और हमारा employability कैसे में बढ़ेगा. They also told us what all can we do with the degree. I hope students की आपको motivated feel हो रहा है अभी to go ahead and do this course. Okay, and I hope कि you decide कि CA में आपका career रहेगा. Hoping to see you in case you decide to do this. And thank you so much. Thank you so much, Raj sir. Thank you. Thank you, students. Thank you for attending. So we'll wrap up the session for today over here and see you all.